Good afternoon. Wish you all a very happy Holi. I hope you all had a good time. So let me share with you some of my thoughts on relative pronouns. Okay? Relative pronouns जो होते हैं ये pronouns का type होते हैं और जैसे for example who, that, which, whose, whom. So these are some of the relative pronouns that we use. Now आप लोग में से कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जो who है, which है, whose है, whom है, ये तो interrogative pronouns भी होते हैं. Yes, होते हैं. That is a demonstrative pronoun also. Yes, it is. That is a conjunction also. Yes, it is. So the point is कि एक ही word multiple parts of speech बन सकता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में. सो यहाँ पे किस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं और हमें इनके बारे में क्या पता होना चाहिए और क्या क्या एरर्स इसमें हो सकती है ये हम देखते हैं. So let's begin with this question. Which of the following sentences is grammatically correct? Shah Rukh Khan, who is Bollywood's biggest superstar, has won 14 Filmfare Awards so far. And Shah Rukh Khan, who is Bollywood's biggest superstar, has won 14 Filmfare Awards so far. Now, the only difference, as you can see, between these two statements is यहाँ पे ये comma missing है और यहाँ पे ये comma है. So, which, as per you, is grammatically correct? Now, those of you who say that second is correct are absolutely right. ओके यहाँ पे हमें कॉमा लगाना पड़ेगा. तो अब ये कॉमा का क्या सिग्निफिकेंस है और रिलेटिव प्रोनाउन से इसका क्या लेना है? तो आप देखिए कि ये जो हु होता है, दिस हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. एंड रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज जो है ये पूरा क्लॉज होता है. ओके अब क्लॉज क्या होता है? ओके क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, तो मे बी वी कैन टेक इट अप इन सम डिफरेंट सेशन. बट क्लॉज जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है. तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट है और वर्ब इज ओके. सो that's on a side note. So basically, ये जो who is Bollywood's biggest superstar is a relative clause and who is a relative pronoun. Okay, now why did we put comma here? Okay, or why did we not choose the sentence which doesn't have a comma? ये हम देखते हैं यहाँ पे कि relative clause जब हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको किस तरीकों से हम यूज कर सकते हैं. सो रिलेटिव क्लॉज जो है वो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं. एक होता है जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव बोल सकते हैं, डिफाइनिंग या एसेंशियल. वी कैन कॉल इट एनी ऑफ दीज. तो ये जो होता है अगर हमको उसको रिलेटिव क्लॉज को सेंटेंस में रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो मतलब है कि उस क्लॉज के बिना उस सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट है. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर क्लॉज इज इंटीग्रल टू द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस. इफ वी रिमूव इट देन द सेंटेंस विल नॉट मेक एनी सेंस. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं द एक्टर हु इज बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपरस्टार हैज वन 14 फिल्म फेयर अवार्ड सो फार. तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है, okay, the actor who is Bollywood's biggest superstar, this is a relative clause. So this gives meaning to this guy. Okay, अगर हम इसको हटा दें, बोलेंगे the actor has won 14 filmfare awards so far. कौन है ये एक्टर? We don't know. So we are trying to give a reference कि जो बॉलीवुड का biggest superstar है वो. So this is basically called a restrictive usage. Whereas if you see, there could be a non-restrictive, non-defining, non-essential usage, which provides additional information. So if I say Shah Rukh Khan, who is Bollywood's biggest superstar, has won 14 Filmfare Awards so far. अब आप शाहरुख खान के फैन हो नहीं हो दैट डजंट मैटर. आई एम आल्सो नॉट अ ग्रेट फैन बट स्टिल सेंटेंस में लगा हुआ है तो ठीक है. तो शाहरुख खान हु इज बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपरस्टार, तो ये जो क्लॉज है दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. सपोज आई रिमूव दिस, शाहरुख खान हैज वन 14 फिल्म फेयर अवार्ड सो फार. तो ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा. ओके सो द सेंटेंस मेक्स मीनिंग. वेर अगर यहाँ पे वेर अगर हम हटा दें इसको, द एक्टर हैज वन 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो हमें नहीं पता कि कौन सा एक्टर है. therefore this is defining and this is non-defining or non-restrictive because even if you remove this the sentence has got clear meaning. तो relative clause जब हम यूज करते हैं तो हमें देखना है कि उसका यूसेज किस तरीके से होगा. ओके ग्रामेटिकली देखिए हु विद कॉमा भी चलेगा सेंटेंसेस में, विदाउट कॉमा भी चलेगा. डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर जो क्लॉज है वो मीनिंग दिखा दे रहा है उसको या नहीं दे रहा है. मीनिंग दे रहा है तो फिर हम कॉमा नहीं लगा सकते. मीनिंग नहीं दे रहा है तो मीनिंग नहीं दे रहा मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो कॉमा लगाना. दैट्स द डिफरेंस. ओके एंड दिस हु as a relative pronoun is used for human beings. Okay, it is not used for inanimate objects or animals. Okay, ये सिर्फ human beings के लिए यूज करते हैं. अब जो let's say okay let me take one more example here for who.
So suppose I say Mukesh Ambani, who heads Reliance Industries Limited, is the world's 11th richest person as on date. तो ये as on date इसलिए लिखा है क्योंकि चेंज होता रहता है. ये आपको अदानी का पता ही है कि just a month or so back he was number 2 or number 3 and now he's you know he's in 30s. Okay, so वो 30 32 something पहुंच गया. तो as on date we can say Mukesh Ambani is the world's 11th richest person. Now, who heads? See, Mukesh Ambani, everybody knows. So this is additional information. Therefore, it has been put in comma. And if we even remove this sentence makes perfect sense. But आप यहाँ पे देखिए, the business leader who heads Reliance Industries Limited is the world's 11th richest person as of date. Now, suppose I remove this clause. तो अब आप बोलेंगे the business leader is the world's 11th richest person on date. It doesn't make any sense. कौन सा business leader? We don't know. Therefore, when we use this as this is called defining or restrictive or essential, ये इसको define कर रहा है. कौन सा बिजनेस लीडर. देयरफॉर वी विल नॉट पुट इट इन कॉमा. ओके, सो इन अ नटशेल अगर आप हु यूज कर रहे हो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन फॉर अ ह्यूमन बीइंग, अगर डिफाइनिंग है तो कॉमा नहीं लगेगा. अगर नॉन डिफाइनिंग है मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है तो कॉमा लगेगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ये हु हो गया. ओके, नाउ सॉरी, लेट्स टेक अ सिचुएशन वेयर इन वी टॉक अबाउट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और मे बी एनिमल्स. तो तब हम दैट लगाते हैं या विच लगाते हैं. okay? इंसानों के केस में क्या होता है कि चाहे रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग हो नॉन डिफाइनिंग हो हु ही लगेगा. लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स देन दैट और विच में डिफरेंस आ जाएगा. दैट कब लगेगा? दैट डिफाइनिंग में लगेगा. ओके, विच कब लगेगा? विच लगेगा नॉन डिफाइनिंग. तो प्लीज बी क्लियर हियर दैट यहाँ पे हम ओवरलैप नहीं कर सकते. वन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द अदर. एंड ऑल्सो वेन एवर विच विल कम इट विल कम विद अ कॉमा बिकॉज इट इज नॉन डिफाइनिंग. Okay, so let's take a look at this example. Apple, which makes iPhones, is the world's largest company by market capitalization. Market capitalization क्या होता है? Number of shares of a company which are there in the market multiplied by the share price today. Okay, so Apple की market cap कुछ 2.3 something trillion dollars. It is the world's largest company by market cap. Now ये जो clause है, ये जो clause है, which makes iPhones, this is an additional information. अगर मैं हटा दूँ तो एप्पल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप. एवरीबडी नोज एप्पल, राइट? एप्पल ऐसा तो है नहीं कि कोई नोबडी इज अवेयर ऑफ इट. तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है. देयरफॉर वी यूज विच एंड वी यूज कॉमा. ओके, एज वी डिस्कस कि जब हम नॉन डिफाइनिंग तरीके से यूज करेंगे तो हम विच लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे. सो दिस इज अ नॉन डिफाइनिंग क्लॉज विच मेक्स आईफोन इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. नाउ इसी का दूसरे तरीके से अगर हम लिख के देखें तो वी से दैट द कंपनी दैट मेक्स आईफोन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप. अब यहाँ पे ये जो क्लॉज दैट मेक्स आईफोन्स, दिस इज अ रिलेटिव क्लॉज. दिस इज नॉट एडिशनल इंफॉर्मेशन. दिस इज इंटीग्रल और डिफाइनिंग टू दिस. बिकॉज अगर मैं इसको हटा दूंगा तो द कंपनी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप डजंट मेक एनी सेंस. कौन सी कंपनी? आई नीड टू टेल ना, आई नीड टू डिफाइन विच कंपनी. देयरफॉर दिस इज अ defining or restrictive or essential clause, and therefore we will use that and we will not put any comma. So defining clause, okay. तो that और which में हमने देखा there is a difference. Defining में हम that लगाते हैं, comma लगाते हैं. Non defining में which लगाते हैं, comma लगाते हैं. Whereas if you look at who और ह्यूमन बींग्स के लिए तो दोनों में who लगाते हैं लेकिन एक में comma लगाते हैं एक में नहीं लगाते. Okay, so I hope you've understood this particular concept. Now let's take a couple of examples before we close this. Let's take one with who. अब यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए. My son, comma, who the doctor has gone to England. My son, who the doctor has gone to England. Now both of these are correct grammatically. Okay, grammatically दोनों correct है, लेकिन मीनिंग अलग अलग. मीनिंग क्या है देखिए. यहाँ पे ये वाले केस में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन which means what कि my son has gone to England, which means what I've got only one son. Okay, somebody asked me that, okay, what's your son doing? My son has gone to England. Okay, so he knows, that person knows that I've got only one son. And incidentally, he is a doctor. So this, even if I remove, the person knows he's got only one son. So my son has gone to England. It makes perfect sense to me. Whereas if I had multiple sons, let's say, suppose मेरे घर पे कोई आया, मेरे दो बेटे, तो he asked me, okay, so where is your son? I say, my son has gone to England. तो वो बोलेगा, which one यार? हमारे तो दो बेटे हैं, right? Then I have to say, my son who is a doctor. This is defining now.
अच्छा, दो हैं आपके, ओके, एक डॉक्टर है एक इंजीनियर है, फाइन, तो सन हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू इंग्लैंड, नाउ ही अंडरस्टैंड्स. So therefore, if I remove this, he will not be able to understand if I have multiple sons. Okay, so this example is just to reiterate कि कॉमा लगाने से और नहीं लगाने से क्या फर्क होता है. अगर हम अगेन एंटिटीज की बात करें, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करें, तो लेट्स लुक एट दिस टू सेंटेंसेस. माय हाउस, कॉमा, विच हैज अ ब्लू डोर, कॉमा, नीड्स पेंटिंग. माय हाउस दैट हैज अ ब्लू डोर नीड्स पेंटिंग. दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सपोज मैंने एक पेंटर को बुलाया, मैंने कहा यार एक घर पेंट करना मेरा. तो वो बोला हाँ हाँ मुझे पता है आपका एक ही घर है वो जिसका ब्लैक डोर है, इंसिडेंट वही ना. उसको पता है मेरा एक ही घर है. Therefore, even if I say my house needs painting, he understands. Whereas if, let's say, I've got multiple houses, I call that painter and I tell him my house needs painting. So he will say, which one? You have got so many houses. So I will define it. My house that has a blue door needs painting. Okay. अच्छा, हो सकता है मेरे घर का डोर येलो हो, किसी का रेड हो. But I'm telling him that my house that has a blue door needs painting means I'm defining this which house. Okay. Therefore, this is a restrictive defining essential. This is non-restrictive, non-defining, non-essential. So again, that और which में which लगाते हैं तो कॉमा लगाते हैं, और that लगाते हैं तो कॉमा नहीं लगाते. Okay, let's take one final example. Who के साथ में my cousin Ravi who scored 100 percentile in CAT lives next door. Since Ravi बता दिया मैंने, my cousin Ravi lives next door, ये हटा सकते हैं. Whereas my cousin who scored 100 percentile in CAT lives next door, यहाँ पे इसको नहीं हटा सकता. This is defining because my cousin lives next door. कोई आपके बहुत सारे cousins हो सकते हैं, कौन सा cousin next door है, right? So I hope you've understood. Just to recap, दो टाइप के क्लॉज होते हैं रिलेटिव क्लॉज, एक डिफाइनिंग, रिस्ट्रिक्टिव और एसेंशियल. ओके, एक ही बात है. इसमें हम हु ही लगाते हैं इंसानों के लिए, और ऑब्जेक्ट के लिए दैट लगाते हैं, कॉमा नहीं लगाते. नॉन रिस्ट्रिक्टिव जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसमें कॉमा लगाते हैं, और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए विच लगाते हैं, और इंसानों के लिए हु ही लगाते हैं. So I hope this lesson is clear to you. Thank you so much and have a good day.